Many people point out that these are extraordinary times and that the world is in a state of ferment. The last few years have witnessed increasing chaos as the planet contends with disease, the devastating effects of climate change, a war between two nations that has caused misery worldwide, and growing financial challenges for countries and societies. Together, these have brought desperation and anger to a boiling point, as people curse their governments for backbreaking inflation, for being unjust and using repressive tactics against them. The citizens of Ghana, Pakistan, Iran and France are all out protesting. Some participate in large public events, whose every moment is choreographed. Others just take to the streets in a swarm armed with sticks and stones and other improvised weapons to make their discontent known. The protesters that have been crowding the streets of Israel are marching to demonstrate against Prime Minister Benjamin Netanyahu's efforts to reform the judicial system in that country and take away its independence by giving parliament, and essentially the party in power, the right to appoint all the judges. The protests have not simply meant people coming out to demonstrate. They have also meant calls for strikes, with flights not able to leave the airports and hospitals canceling non-emergency treatment. Concerns have also gripped the forces, with military reservists joining the demonstrations. While Israel has pretended to be the only Middle Eastern nation to be a democracy, its actual politics have not followed the expected democratic trajectory, especially where human rights are concerned. It has been castigated internationally for treating Palestinians and Israeli Arabs like criminals and subjecting them to the daily humiliation of endless checkpoints and searches, besides wrecking their homes, building on their lands and killing them with bombs and guns. It is entirely possible that the Israelis are done with the autocratic drivel falling off the lips of a man they once thought made sense. Today, the zeal with which Israel's far right is trying to erode the powers of the instruments of state and making institutions subservient to the government of the day is perhaps unprecedented, as it affects more than just the Arab population. On the face of it, Prime Minister Netanyahu has capitulated and delayed his reform plans. With the number of protesters threatening to grow even more, he agreed to withdraw his government's proposal if the protesters also retreated. Nor have the protesters been limited to Tel Aviv. The city of Jerusalem saw 100,000 people in the streets, everyone seemed to be enjoying a party atmosphere. The stress on the Prime Minister has been all too visible. It is entirely possible that the Israelis are done with the autocratic drivel falling off the lips of a man they once thought made sense, but is now just desperately clinging to power by any means necessary. His firing of his defense minister, Yoav Gallant, who had spoken out against the Prime Minister's intention to reform the judiciary, is further proof that Netanyahu's goal is to only have those people around him who agree with his plans and marvel at his brilliance. Meanwhile, the Palestinians, whose protests have been trampled upon by bulldozers and bullets, continue to witness the unfolding saga. In a telling article in Newsweek, a social activist in the Gaza Strip, Mohammed Shihada, writes about how this long-forgotten segment of the population feels. But watching the protests as a Palestinian was bittersweet. Most of us have never experienced the rights and liberties that Israelis are fighting tooth and nail to preserve for themselves, and to us Palestinians, this tension between what Israelis were willing to risk for their own rights, and how little they seemed to care about ours, was a painful juxtaposition. The real reason behind Netanyahu's declining popularity and imminent downfall may well be that the agenda of his far-right party, which prioritizes security at the cost of just about everything else, is becoming redundant in the eyes of the people. The biggest challenge that the world faces today is not the repercussions of the terrible events of 9/11 but the rapidly boiling Earth's surface. The mad hunting down of international terrorists post 9/11 doesn't quite impress people or make them feel instantly patriotic as they once did. A large number of adults, the older Gen Z in particular, were born after September 11th and remember the tragedy as a historical event rather than as an example of a clear and present danger. The protests that are happening in Israel reflect similar discontent in other countries, where men and women are taking to the streets to protest against one leader, cheer another, and to reject old institutions at least in the form they exist. Have the people of the world finally become fed up?
These emotions are going to change the globe. Another bit of bad news for Israel has been the thaw between arch-rivals Iran and Saudi Arabia, who agreed to step back from their hostile positions after a meeting negotiated by the Chinese. It could well be that a peaceful Middle East, where Iran and Saudi Arabia are not in some perverse arms race, will finally sound the death knell for the ongoing cash pipeline between the United States and Israel. That same pipeline of cash is also threatening the rift emerging between the Israeli and American Jews. The former have become used to being cruel and treating the Palestinians as inhuman, and the latter are stunned when they learn of the bans on medicine and medical supply to the occupied West Bank. This is a precarious time in Israel, with internal dissent and geopolitical alliances changing fast. At a time when people have decided to hold governments and institutions accountable, and new regional influences are starting to exert themselves, it will soon find itself without recourse to a solution. The writer is an attorney teaching constitutional law and political philosophy. Published in Dawn, March 30, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. बहुत से लोग बताते हैं कि यह गैर मामूली वक्त है और ये कि दुनिया अफरा तफरी की हालत में है। गुज़िश्ता चंद सालों में कुरा अर्ज़ में बढ़ती हुई अफरा तफरी देखी गई है क्योंकि कुरा अर्ज़ बीमारी, मौसमियाती तब्दीली के तबाकुन असरात, दो ममालिक के दरमियान जंग जिसने दुनिया भर में बदहाली पैदा की है और ममालिक और मुआशरों के लिए बढ़ते हुए माली चैलेंजेस का सामना है। इन सब ने मिलकर मायूसी और गुस्से को उरूज पर पहुंचा दिया है क्योंकि लोग अपनी हुकूमतों को कमर तोड़ महंगाई, नाइंसाफी करने और उनके खिलाफ जाबिराना हथकंडे इस्तेमाल करने पर लानत भेजते हैं। घाना, पाकिस्तान, ईरान और फ्रांस के शहरी एहतजाज कर रहे हैं। कुछ बड़े अवामी प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं जिनके हर लम्हे को कोरियोग्राफ किया जाता है। दूसरे लोग लाठियों, पत्थरों और दीगर देसी साख्ता हथियारों से लैस झुंड में सड़कों पर निकल आते हैं ताकि अपनी नाराजगी का इजहार कर सकें। इसराइल की सड़कों पर जमा होने वाले मुजाहिरीन वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से मुल्क में अदालती निज़ाम में इस्लाहात और पार्लिमान और बुनियादी तौर पर बरसरे इक़्तिदार जमात को तमाम जजों की तकर्रुरी का हक देकर उसकी आज़ादी छीनने की कोशिशों के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। एहतजाज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोग एहतजाज करने के लिए बाहर निकले। उनका मतलब हड़तालों की काल भी है जिसमें हवाई अड्डों और अस्पतालों से परवाजें नहीं निकल सकेंगी और गैर हंगामी इलाज मनसूख कर दिया गया है। मुजाहिरों में फौजी रिजर्व की शिरकत से फोर्सेस को भी तशवीश का सामना है। अगरचे इसराइल मशरिक वस्ता में जमहूरियत रखने वाला वाहिद मुल्क होने का दिखावा करता रहा है, लेकिन इसकी असल सियासत मुतवक्के जमहूरी रास्ते पर नहीं चल सकी, खास तौर पर जहां इंसानी हुकूक का ताल्लुक है। बैन अल-अक़वामी सतह पर फ़लस्तीनियों और इसराइली अरबों के साथ मुजरिमों जैसा बर्ताव करने और उन्हें रोज़ाना ना ख़त्म होने वाली चौकियों और तलाशियों की ज़िल्लत का निशाना बनाने के अलावा उनके घरों को तबाह करने, उनकी ज़मीनों पर तमीरात करने और बमों और बंदूकों से हलाक करने पर तनक़ीद का निशाना बनाया जाता रहा है। ये मुकम्मल तौर पर मुमकिन है कि इसराइलियों को एक ऐसे शख्स के होंठों से गिरने वाली आमिराना हरकत का सामना करना पड़ा हो जिसके बारे में वो कभी समझते थे कि यह समझ में आता था। आज इसराइल का इंतहाई दाएं बाजू जिस जोश व खुरूश के साथ रियासत के आलाकारों के इख्तियारात को ख़त्म करने और इदारों को इस वक्त की हुकूमत के मातहत बनाने की कोशिश कर रहा है, इसकी शायद कोई मिसाल नहीं मिलती क्योंकि इससे सिर्फ अरब आबादी से ज़्यादा लोग मुतासिर होते हैं। दरहकीकत वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने इस्लाहाती मंसूबों को नज़रअंदाज कर दिया है और इसमें ताख़ीर कर दी है। मुजाहिरीन की तादाद में मज़ीद इजाफे की धमकी के बाद उन्होंने अपनी हुकूमत की तजवीज़ वापस लेने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की अगर मुजाहिरीन भी पीछे हट गए। न ही मुजाहिरीन तुल अबीब तक महदूद रहे हैं। यरूशलेम शहर में 1 लाख अफराद सड़कों पर नजर आए और हर कोई पार्टी के माहौल से लुत्फ़ अंदोज हो रहा था। वज़ीर आज़म पर दबाव बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। ये मुकम्मल तौर पर मुमकिन है कि इसराइलियों को एक ऐसे शख्स के होंठों से गिरने वाली आमिराना हरकत का सामना करना पड़े जिसके बारे में वो कभी सोचते थे कि यह समझ में आता था, लेकिन अब वो किसी भी तरह से इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं।
अदलिया में इस्लाहात के वज़ीर आज़म के इरादे के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अपने वज़ीर दिफा और गैलेट को बरतरफ करना इस बात का एक और सबूत है कि नेतन्याहू का मकसद सिर्फ इन लोगों को अपने अर्द गिर्द रखना है जो उनके मंसूबों से इत्तेफाक करते हैं और उनकी जहानत पर हैरत ज़दा होते हैं। दरियासना फ़लस्तीनी जिनके एहतजाज को बलडोज़र और गोलियों से कुचल दिया गया है, अब भी मंजर आम पर आने वाली कहानी देख रहे हैं। न्यूज़ वीक में शाये होने वाले एक मजमून में गजा की पट्टी के एक समाजी कारकुन मोहम्मद शहदा ने लिखा है कि आबादी का ये देरीना भूला हुआ तबका कैसा महसूस करता है, लेकिन एक फ़लस्तीनी की हैसियत से मुजाहिरों को देखना तल्ख था। हम में से ज़्यादातर लोगों ने उन हुकूक और आज़ादियों का कभी तजर्बा नहीं किया जो इसराइली अपने और हम फ़लस्तीनियों के लिए अपने और हम फ़लस्तीनियों के लिए ख़तरे में डालने के लिए लड़ रहे हैं। उनके दरमियान ये तनाव एक तकलीफ़देह वाक़या था। नेतन्याहू की गिरती हुई मकबूलियत और उनके ज़वाल की असल वजह यह हो सकती है कि उनकी इंतहाई दाएं बाजू की जमात का एजेंडा जो हर चीज़ की कीमत पर सिक्योरिटी को तरजीह देती है, अवाम की नज़रों में बेमानी होता जा रहा है। आज दुनिया को जिस सबसे बड़ा चैलेंज का सामना है वो 9/11 के हौलनाक वाक़यात के नताइज नहीं बल्कि तेज़ी से उबलती हुई ज़मीन की सतह है। 9/11 के बाद बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दों का पागल शिकार न तो लोगों को मुतासिर करता है और न ही उन्हें फौरी तौर पर हुब अल-वतानी का एहसास दिलाता है जैसा कि उन्होंने कभी किया था। बालिगों की एक बड़ी तादाद, ख़ास तौर पर उम्र रसीदा जनरल ज़ेड, 9/11 के बाद पैदा हुए थे और इस सानिये को एक वाज़े और मौजूदा ख़तरे की मिसाल के बजाय एक तारीख़ी वाक़या के तौर पर याद करते हैं। इसराइल में होने वाले मुजाहिरे दूसरे ममालिक में भी इसी तरह की बेइत्मीनानी की अक्कासी करते हैं, जहां मर्द और ख़वातीन एक रहनुमा के खिलाफ एहतजाज करने, दूसरे को खुश करने और कम अज़ कम पुराने इदारों को कम अज़ कम इस शक्ल में मुस्तरद करने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। क्या दुनिया के लोग आखिरकार तंग आ चुके हैं? ये जज्बात दुनिया को तब्दील करने जा रहे हैं। इसराइल के लिए एक और बुरी खबर रिवायती हरीफ ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सर्द मेहरी है, जिन्होंने चीन की जानिब से मुज़ाकरात के बाद अपने दुश्मनाना मौक़िफ़ से पीछे हटने पर इत्तेफाक किया था। ये भी हो सकता है कि एक पुरअमन मशरिक़ वस्ता, जहां ईरान और सऊदी अरब हथियारों की किसी गलत दौड़ में शामिल नहीं हैं, बिलाखिर अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी नक़द पाइपलाइन के लिए मौत की घंटी बजा देगा। नक़द रकम की यही पाइपलाइन इसराइली और अमरीकी यहूदियों के दरमियान पैदा होने वाली दरार को भी खतरे में डाल रही है। पहले लोग ज़ालिमाना रवैया इख्तियार करने और फ़लस्तीनियों के साथ गैर इंसानी सलूक करने के आदी हो चुके हैं, और जब उन्हें मकबूजा मगरबी किनारे में अद्वियात और तिब्बी फराहमी पर पाबंदी के बारे में मालूम होता है तो वो दंग रह जाते हैं। ये इसराइल में एक गैर यकीनी वक्त है जहां दाखिली इख्तिलाफात और जुग्राफियाई सियासी इत्तेहाद तेजी से तब्दील हो रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब लोगों ने हुकूमतों और इदारों का एहतसाब करने का फैसला किया है और नए इलाकाई असरात अपने आप को फैलाना शुरू कर रहे हैं, ये जल्द ही किसी हल का सहारा लिए बगैर खुद को तलाश करेगा। मज़मून निगार आईनी कानून और सियासी फ़लसफ़े की तालीम देने वाले वकील हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 30 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.